तो देखिए हमारे संपूर्ण शरीर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड अवर बॉडी इन टू पार्ट्स, राइट लेफ्ट, what is the right part of the body and what is the left part of the body? Right part means yin part of the body and left part is means yang part of the body. It is a general if we do the comparison. So if we talk about the pulse, so this can be read by upper pulse, the upper part can be read by upper pulse, the middle part can be read by middle pulse, and the lower part can be read by lower pulse. यानी हमारे शरीर के ब्रेन में क्या हो रहा है, हार्ट और लंग्स में क्या हो रहा है, तो ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये सब अपर पल्स होती है, और हमारे लिवर में, हमारे डाइजेशन में क्या हो रहा है वो सब मिडिल पल्स से पता चलेगा, और शरीर के नीचे के भागों में, किडनी में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, पैरों में क्या हो रहा है ये हमें पता चलेगा लोअर पल्स के द्वारा. So when we are checking the pulse in our whole body, there are many points where we can feel the pulse. Like we can feel the pulse in the temporal area, that is called temporal pulse. We can feel the pulse in the neck area, that is called carotid pulse. We can feel the pulse in the inguinal area, that is called inguinal pulse. We can feel the pulse on the back side of the knee, that is called popliteal pulse. We can feel the pulse in the ankle area, that is called pedial pulse. So there are many pulse, many area where we can feel the pulse for a diagnostic purpose. हम डायग्नोसिस करने के लिए कई जगह पल्स को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर का जो सबसे फ्रेंडली और जो कॉमनली एरिया होता है पल्स चेक करने का, वो होता है रेडियल पल्स. Radial pulse is the most common area to check the pulse in the wrist region, in the wrist. तो जब भी हम wrist की बात करते हैं, so radial pulse is going from here on the thumb side. This is called radial pulse because the name of this artery is radial artery. तो जब हम इस रेडियल आर्टरी में पल्स को चेक करते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियल पल्स. हमारा अगर यह रिस्ट है, दिस इज द रिस्ट. If we see the wrist, so this is the center part of the arm, and this is the side part of the arm.
In between this area, this is the pulse area where we check the pulse. यानी जब भी हम नाड़ी चेक करते हैं तो एक तो हुआ हमारे सेंटर पार्ट आर्म का और एक हुआ आउटर पार्ट। तो इन दोनों के बीच में यह जो लाइन है यहाँ पर हम पल्स को चेक करते हैं। ये हमारे पल्स का एरिया है। एक बार हम आपको हाथ में दिखा देते हैं। तो ये हाथ देखिए एक बार आप। इस इमेज के आधार पर ये तो सेंटर में हुआ हमारा, सेंटर का भाग, दिस इज द सेंटर पार्ट, दिस इज द मोस्ट आउटर और लेटरल पार्ट। इन दोनों के बीच में यह जो एरिया है यहाँ पर हम पल्स चेक करते हैं। So this is a radial pulse, which is more common. So we keep our one finger here. We keep our second finger here. And we keep our third finger here. So we keep index finger here. We keep middle finger here. And we keep ring finger here. इस तरह से यहाँ पर हम 3 उंगलियों को रखते हैं और हम उंगलियों का टिप ना रखकर फिंगर पैड्स को रखते हैं। फिंगर पैड का अर्थ है कि अगर हम इस उंगली में देखें तो ये तो हुआ टिप, लेकिन ये हुआ फिंगर पैड, इसे हम कहते हैं फिंगर पैड। So we keep the finger pad on the pulse to feel the pulse. जब हम फिंगर पैड्स को देखते हैं, when we see the finger pads, so in the finger pads, we can see a small circle like that, or something like that, some different shape. But every circle having one center. This is called मर्म चक्र। मर्म चक्र, इसको मर्म चक्र कहते हैं। इसी से हम पल्स के वाइब्रेशन को फील करते हैं। So that's why we don't keep the fingertip. We don't keep the fingertip, we keep the finger pads. We keep this area to check the pulse. And slowly we develop the sensitivity. Because the checking the pulse is not checking the just beat of pulse. पल्स को चेक करना सिर्फ पल्स रेट को काउंट करना नहीं है कि 1 मिनट में 70, 72, 75 बार चल रही है। That is not pulse. As per pulse diagnosis, we have to feel the music of pulse. What is the problem inside? So whenever we are checking the pulse, we are keeping index finger here, middle finger here, and ring finger here. So we are keeping 3 fingers. और जब भी हम अपने हाथों को रखते हैं, हम हमेशा ये अंगूठे की तरफ से ही रखते हैं। We never keep our hand from the other side. We don't keep the hand from the small finger side. Like, I will show you the wrong position. If you keep the hand like that,
This is the wrong position. We should not keep the fingers from the other side, from the small finger side. We always have to keep the finger from the radial side or thumb side when we are checking the pulse. These are the rules. Many persons are not following this rule, but still they are checking good pulse because they have done this practice since long time. So they are now experts. But in the acupuncture, even in the Ayurveda, this technique has been given that how we should keep our hand. हमें अपना हाथ कैसे रखना चाहिए, ये है मेथड हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक्यूपंक्चर में लिखा है. So whenever any person is standing and keeping the hand like that, एक कोई व्यक्ति अगर हाथ अपना ऊपर करके खड़ा है, तो आप इस दूसरी इमेज में देख सकते हैं. Suppose this is the person. अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ है, so in this condition, when anyone is keeping the hand like this, so this part is called upper body. This part is called middle body. And this part is called lower body. यानी रिस्ट की तरफ जो भाग है वो अपर बॉडी का है, फिर उसके बाद मिडिल बॉडी का है और फिर लोअर बॉडी का है. तो लगभग एक फिंगर का एरिया अपर बॉडी का है, फिर एक फिंगर का एरिया मिडिल बॉडी का है और फिर एक फिंगर का एरिया लोअर बॉडी का है. एक्यूपंक्चर में अपर बॉडी, middle body, lower body. The meaning of upper body means wrist side, and this is away and more away from wrist. तो जब भी हम अपर बॉडी के बारे में पता करना चाहते हैं कि अपर बॉडी में क्या हो रहा है, what is happening in the upper body till this area, till the lungs, heart area, so we can find out with the help of first finger, or index finger. In the acupuncture we tell it chun, chun. And if we want to find out what is happening in the middle body, is what is happening with the liver, what is happening with the stomach and spleen. So liver, stomach and spleen. So that can we find out with the middle finger.
or in the acupuncture we tell it guan. Guan. Guan means middle body. Now, if we want to find out what is happening in the lower body, the meaning of lower body means kidney, reproductive part, so we can find out with the third finger, that is ring finger. In the acupuncture we tell it chi. So chun, guan, chi. Chun means upper body, means lung and heart. Guan means middle body, means liver and spleen. And chi means lower body, means kidney and reproductive part and all. So in the acupuncture we tell it chun, guan, chi. So as per the acupuncture, upper part chun, middle part is called guan, and lower part is called chu, chi. So this is the upper body, this is the middle body, and this is the lower body. So we tell it chun, guan, chi, and we can find out with the pulse. So this is the first condition is first upper is chun, second is guan, third is chi. So this is the right hand and this is the left hand. So upper chun is lungs and heart. So lungs and heart. Right side is a lung, left side is a heart. The middle is liver and spleen. So spleen and liver. Right side is spleen, left side is liver. And the lower is kidney and kidney. Right side means right kidney and left side means left kidney. तो इस तरह से हम पल्स देखते हैं. तो सबसे ऊपर से हम राइट हैंड में देखते हैं लंग्स, लेफ्ट में हार्ट. अब ये क्वेश्चन आता है कि राइट में लंग्स क्यों होता है, लेफ्ट में हार्ट क्यों होता है. सी, द राइट हैंड इज यिन and the left hand is yang. और यिन का अर्थ है फैमिली और yang का अर्थ है alone, अकेला. So when we talk about the lungs, lungs are in the family. But when we talk about the heart, heart is alone, single. So heart is more young organ than the lungs. So heart go on the left side. तो जब हम दोनों हाथों की पल्स को चेक करते हैं, हार्ट हमें लेफ्ट में मिलता है और लंग्स राइट में. Now second, when we compare the liver and spleen, the question is this: why liver in the left side? Why liver in left side? So when we talk about the liver and spleen, so liver is aggressive. Liver is a fighter. Liver is like a great general. Liver is always excessive. Liver is always excessive. Liver means extrovert. Extrovert. Liver means expression out. So this is the more yang. So it is going in the left side because left is yang. But when we talk about the spleen means overthinking. Spleen means anxiety,
thinking inside, not expressing out. Spleen is connected with the introvert nature. In the 5 element cycle also, we can see the liver is a wood element which is arising up, and spleen is an earth element which is going down. So spleen is a yin and liver is a yang. So spleen is a yin organ. तो जो भी yin है वो राइट में रहेगा, because right hand is yin. So spleen is in the right side and liver is in the left side. तो जब भी हम पल्स को चेक करते हैं, तो अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो पहले ये हार्ट मिलेगा, हार्ट इज यांग एंड लंग इज इन. फिर लिवर मिलेगा, लिवर इज यांग, स्प्लीन इज इन. फिर हमको दोनों किडनी मिलेगी. ये मीन्स राइट किडनी and left kidney. So in this way we are checking the pulse. So if I ask you, tell me what is the meaning of chun? Chun. So your answer should be, chun means toward the wrist. चुन का मतलब क्या है? रिस्ट की ओर, जिसमें लंग भी आता है, हार्ट भी आता है. राइट में लंग और लेफ्ट में हार्ट. Then I will ask you, what is guan? तो आप बोलेंगे the middle pulse is guan. The middle part of the body is coming in the guan pulse. Spleen and liver. Liver is a very young organ, so it is coming on the young side. Now the last is kidney. So right kidney, left kidney. Right kidney is coming on the right side and the left kidney is coming on the left side. तो अपर पल्स के द्वारा हम अपर बॉडी को चेक करते हैं, मिडिल पल्स के द्वारा मिडिल बॉडी को, और लोअर पल्स के द्वारा हम लोअर बॉडी को. So left hand or right hand. The pulses chun, guan, chi. Left hand means yang, right hand means yin. So the pulse is like that: heart, liver, and left kidney on one side, lung, spleen, and right kidney on the other side. So we can check pulse in this way. And what is the difference between right and left kidney? The left kidney is the real kidney, which is connected with the filtration, which is connected with the urination. The left kidney is the real kidney, which is connected with the filtration, urination. जब भी हम किडनी की बात करते हैं कि देखो किडनी का काम क्या है, यूरिन को बनाना, यानी कभी भी किसी को यूरिन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा लेफ्ट किडनी का विचार करते हैं. And right kidney is connected with the reproductive activity. राइट किडनी का संबंध रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी से है. राइट किडनी का संबंध है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, इनफर्टिलिटी से. वो सब राइट किडनी के क्राइटेरिया में आता है. सो राइट किडनी इज कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो जब भी हम पल्स चेक करते हैं, हम दोनों हाथों की किडनी को चेक करते हैं. राइट किडनी का संबंध है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ और लेफ्ट किडनी का संबंध है हमारे फिल्ट्रेशन के साथ. So in the human body we are having two kidneys, left kidney and right kidney. So right kidney is connected with the reproduction and left kidney is connected with the filtration. जो राइट किडनी के अंदर जो ऊर्जा बहती है, राइट किडनी की ऊर्जा को जो फ्लो करता है ऑल अराउंड,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द टू किडनीज, वन इज द राइट किडनी, वन इज द लेफ्ट किडनी। तो राइट किडनी की जो ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो करती है वो ट्रिपल वार्मर के द्वारा फ्लो करती है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के द्वारा फ्लो करती है। हमारे शरीर में एक मेरिडियन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किडनी की ऊर्जा होती है। इनसाइड द ट्रिपल वार्मर वी आर हैविंग किडनी एनर्जी। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं, कई लोग जब पल्स की बात करते हैं तो ऐसा भी कहते हैं। तो जब भी हम राइट साइड की पल्स की बात करते हैं तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो पहली पल्स है लंग्स और इसका कपल यानी लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। The first pulse is connected with the lungs and large intestine, both are couples. Second pulse का संबंध है स्प्लीन और स्टमक, both are couple. अब थर्ड पल्स का संबंध वो किडनी ने से ना मानकर लिखते हैं ट्रिपल वार्मर, सो पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। लेकिन ट्रिपल वार्मर कोई ऑर्गन तो होता नहीं हमारे बॉडी में। देयर इज नो ऑर्गन like triple warmer in the human body. So either we write this or we write kidney, both are same. Because kidney की ऊर्जा ही ट्रिपल वार्मर में फ्लो करती है। In the same way, if we go other side, so we know this is the heart. तो हार्ट और इसका कपल दोनों यहीं पर आएंगे, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों वहीं पर आएंगे। लिवर एंड गॉल ब्लैडर both will be on the same place because both are the couple, and kidney and urinary bladder both will be on the same place because both are couple. So this energy, the kidney energy available on two sides, kidney energy available on two sides. So in this way, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें और राइट हैंड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड में हमें मिलती है पल्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट की, गॉल ब्लैडर एंड लिवर की, यूरिन ब्लैडर एंड किडनी की। और राइट हैंड में हमें पल्स मिलती है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की, स्प्लीन एंड स्टमक की, और सेम किडनी एंड यूवी की। सो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में हमें जो पल्स मिलती है वो इस तरह से मिलती है, यानी दोनों कपल यिन यांग कपल की पल्स एक ही जगह मिलती है। when we touch little or when we touch gently, then we find the pulse of young organ like small intestine, like gallbladder, like urinary bladder, like large intestine, like stomach. जब हम उसको जेंटली टच करते हैं तो हमें यांग की पल्स मिलती है, बट when we press little more, when we press deeply, when we press little more, तो हमें जो पल्स मिलती है वो यिन की पल्स मिलती है। जैसे कि जब जब ज्यादा दबाते हैं तो जो पल्स मिलती है वो हार्ट की पल्स, लिवर की पल्स, किडनी की पल्स, लंग की पल्स, स्प्लीन की पल्स, सारे यिन ऑर्गन की पल्स डीपर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस द आर्म, let's see in the other image. For example, if we are pressing very little here,
if we are pressing very little here, press gently, तो हमें पल्स मिलेगी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की. But if we press little deeply, then we'll find the pulse of yin organ. तो जब भी हम राइट हैंड की पल्स को, किसी भी स्थान की पल्स को थोड़ा सा टच करते हैं तो यांग की पल्स होती है, लेकिन जब उसको हम थोड़ा दबाते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें यिन की पल्स मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, when we are touching, pressing gently, this pulse is large intestine pulse. But when we are pressing deeply, this pulse is lung pulse at the same place. Why? Because lungs is hidden, because yin is hidden inside and yang exposed outside. तो जब भी हमने यहाँ पर जरा सा टच किया तो हमें लंग्स की पल्स, हम लार्ज इंटेस्टाइन की पल्स मिलेगी, और जब इसको हमने डीपली दबाया तो हमें लंग की पल्स मिलेगी. इन द सेम वे, जब हमने इस स्थान पर थोड़ा सा जेंटली प्रेस किया तो हमें स्टमक की पल्स मिलेगी. बट व्हेन वी आर प्रेसिंग डीपली तो यिन ऑर्गन की पल्स मिलेगी, मींस स्प्लीन. Because stomach is a yang organ, so it will be upper side, and in the deeper side, yin organ, spleen will be there. In the same way, when we press here gently, then pulse will be urinary bladder, or we can tell triple warmer. लेकिन जब हम इसको तेज दबाएंगे, गहराई में जाएंगे अंदर, then we'll find the pulse of kidney, or then we'll find the pulse of kidney. In the same way, so this is the right hand. अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, so these are the three areas, 1, 2, and 3. When we touch gently, this pulse will be a small intestine pulse, small intestine. लेकिन जब इसी को हम तेज दबाएंगे, when we press little deeply, deeper pressure, so this will be the pulse of heart at the same place. So this pulse goes to the heart and small intestine. At the second place, when we touch it gently, this pulse belongs to the gallbladder, because gallbladder is a yang organ. The middle pulse goes to the gallbladder and liver. So when we touch this middle pulse very gently, this pulse goes to the gallbladder.
And when we touch the deep pressure, then this pulse belongs to the liver. Same pulse. And the third one, when we touch this pulse gently, this pulse goes to the urinary bladder. When we touch it gently, जब इसको धीरे से टच करते हैं तो ये यूरिनरी ब्लैडर की पल्स है. लेकिन जब इसी पल्स को हम तेज दबाएंगे, डीपर जाएंगे, then this pulse will be belonging to the kidney, deeper pressure. So all the yin organ are hidden inside. All the yin organ are hidden inside. So this kidney pulse will be available on the deeper side. So जब हम टच करते हैं जरा सा और हमें जो भी थ्रॉबिंग फील होती है उसके माध्यम से हम पल्स के बारे में पता करते हैं. तो हमारे बेसिक टीसीएम में पल्स की पोजीशन के बारे में उल्लेख है. इसका प्रिडिक्शन समझने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो फाइनली हमारा जो चार्ट बनके तैयार हुआ वो इस प्रकार से होगा. पल्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थ्री पोजीशन चुन, गुआन and chi. Then we are having two conditions. Superficial pulse or upper pulse and deeper pulse. Superficial pulse and deeper pulse. So now, this is the left hand. So in the left hand, chun, superficial, small intestine, deeper is heart. In the left hand, second is guan, superficial, gallbladder, deeper is liver. Left hand chi position, superficial, urinary bladder, left is and deeper is kidney. Now coming to the right hand. In the right hand chun position, superficial, large intestine, deeper is lungs. In the guan position, superficial stomach, deeper is spleen. And the chi position, superficial is triple warmer, deeper is pericardium, and both together can be considered kidney pulse, which is reproductive kidney. Because inside the triple warmer, the energy found, that is the kidney energy. तो ये पूरा पल्स के बारे में है. हमें पोजीशन पता होना चाहिए पल्स की. Right hand, left hand. Chun,
Guan Chi. So superficial and deeper. Superficial is large intestine, lung, stomach, spleen, triple valve, and pericardium. And on the other side, superficial and deep. Small intestine, heart, gallbladder and liver, urinary bladder and kidney. So this is the completion. जितना हमारे कोर्स में है उतना ही है बस. देखिए पल्स का प्रिडिक्शन करना के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. केवल अब आपने पूछा तो इसका जवाब दे देता हूँ कि राइट हैंड की पल्स अगर तेज है और लेफ्ट हैंड की कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, उसको फैटी लिवर या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है या उसको ब्रेन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई जा सकती है. ही में सफर विद सम लिवर और ब्रेन डिसऑर्डर्स.